This is 198th module of this course of financial management, and we are moving into the discussion of cost of equity using a different method which is called the capital asset pricing model, or CAPM. We have had this discussion on CAPM from a different perspective earlier, but here we'll use it for the calculation of the cost of equity holders. Equity holders are the common shareholders, the people who are the real owners of a business or a company. Their rate of return can be calculated in different ways, but one way is using the capital asset pricing model. These are some of the important features of this model. Number one, that this model helps us to calculate the cost of equity. Number one, and then in this model, there is a consideration of what is called the risk-free rate of return. यानी वो रेट ऑफ रिटर्न कि अगर कोई इन्वेस्टर रिस्क ना ले तो तब भी उसे मिलता रहेगा. दिस इज कॉल्ड RF, और रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न. देन देयर इज अ मार्केट रेट ऑफ रिटर्न. मार्केट रेट ऑफ रिटर्न की डेफिनेशन सिर्फ यही है कि ऑन एवरेज किसी इन्वेस्टर को स्टॉक मार्केट से क्या रिटर्न मिल सकता है और मिलता है, उसको हम मार्केट रेट ऑफ रिटर्न का नाम देते हैं. ये मार्केट रेट ऑफ रिटर्न कैसे कैलकुलेट किया जाता है? इसको हम स्टॉक मार्केट के मेन इंडेक्स की फ्लक्चुएशन से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, या किसी बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के एवरेज रिटर्न के जरिए से भी हम मार्केट रेट को डिटरमिन कर सकते हैं. देन there is an additional return which an equity holder or a shareholder gets above the risk-free rate of return, and that is called risk premium. यानी जब कोई मार्केट में इन्वेस्ट करता है और रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न को छोड़ देता है, तो जो एडिशनल रिटर्न उसको मिलता है, दैट इज कॉल्ड द रिस्क प्रीमियम. ये रिस्क प्रीमियम अफेक्ट होता है एक ऐसी वैल्यू से जिसको हम इंडेक्स ऑफ सिस्टमैटिक रिस्क या बीटा का नाम देते हैं. यानी अगर मैं बीटा को एक्सप्लेन करूं तो यूं कह सकता हूं कि बीटा असल में एक ऐसा पैमाना है जो हमें ये बताता है कि मार्केट के अंदर कितना रिस्क पाया जाता है, और किसी स्पेसिफिक स्टॉक के अंदर क्या मार्केट से रिस्क ज़्यादा पाया जाता है या कम पाया जाता है. तो अगर बीटा की वैल्यू 1 होगी तो हमें पता चल जाएगा कि इस स्टॉक का रिटर्न मार्केट के बिल्कुल बराबर है. बट इफ बीटा इज ग्रेटर देन 1, दैट मीन्स स्टॉक विल गिव अस हायर रिटर्न्स. इफ बीटा इज लेस देन 1, that means stock will give us lesser return. Let's have a look at the formula of capital asset pricing model. The return on equity, which is shown as RE, is actually equal to the sum of risk-free rate of return and the risk premium. हमने अभी ये बात देखी कि रिस्क प्रीमियम असल में कैलकुलेट किया जाता है मार्केट रेट और रिस्क फ्री रेट के डिफरेंस से. एनीथिंग अबव द रिस्क फ्री रेट अप टिल द मार्केट रेट इज द रिस्क प्रीमियम. यानी ये वो इजाफी रिटर्न है जो शेयर होल्डर को मिलेगा स्टॉक मार्केट में रिस्क लेकर इन्वेस्टमेंट करने की वजह से. तो RM minus RF is the risk premium. And finally, in this formula, this rate of return is adjusted for what we call beta. यानी बीटा का मतलब है कि हमें वो इंडेक्स की वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई करनी है जो हमें ये बता रही है कि इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर क्या रिस्क मार्केट के मुकाबले में कम है या ज़्यादा है, जैसे कि हमने 1 या ग्रेटर और लेस देन 1 से देखा. So a higher beta will increase the cost of equity, a lower beta than 1 would reduce the cost of equity, and beta equal to 1 will give us exactly that cost of equity, which will be equal to the market value. So this capital asset pricing model formula is very frequently used to calculate the cost of equity capital.